Good evening, NJ partners and my NJ team members. My name is Gaurav Raichura. I am a regional head and look after 3 branches in Mumbai. Today we have a session on a launch of a new NFO by Canara Robeco Mutual Fund. NFO name is Canara Robeco Manufacturing Fund. As we know, manufacturing theme is also called or a slogan Make in India, launched by a current government in 2015 somewhere. This is a very close to the heart of our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi to make India Atmanirbhar and competitive of the world and specifically for China, right? So to speak more on this, we have with us Mr. Amit Nadekar, who is Senior Fund Manager of Canara Robeco Mutual Fund. If I talk about background of Amit sir, he is a CA by qualification, did masters in management studies from Jamnalal Bajaj Institute, having 22 years plus rich experience including Alchemy Management Private Limited. Currently, he is in the Canara Robeco since August 2023 and manages Canara Robeco Emerging Equity Fund. So I invite Amit sir to take us through the new NFO presentation. Thank you so much for that, those kind words and introduction. Uh, Hindi, English, both mix ki English Both is will work. fine. Both will work. Both will work, right? ठीक है. Preference English की हिंदी? चलेगा सर. चलेगा ना? Okay. Yeah. I will try to kind of speak as much हिंदी जितनी भी बोल सकता हूँ. तो ये मैन्युफैक्चरिंग फंड जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पे हम लोग लेके आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन का फ्लो कुछ ऐसे है. पहले हम थोड़ा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेंगे मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी का, या कैसे पैन आउट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में. उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डाउट क्वेश्चन सबके दिल में है, दिमाग में है, जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे. ये सवाल ये है कि पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज होती रहती है, बराबर, और आज जो थ्रस्ट दिया जा रहा है या आज जो स्कीम लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं, क्या ये अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाएगी, राइट? जैसे हम लोगों ने अभी शुगर सेक्टर में एक पॉलिसी का पॉज देखा, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहता है. तो हम लोग ये सवाल या ये बड़ा डाउट एड्रेस करेंगे कि क्यों कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है फिर भी ये फोकस थ्रस्ट कम नहीं होगा. देन हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में फ्लरिश होने के लिए कौन से ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट है, राइट? बाद में हम लोग ये मुद्दे पे आएंगे कि अभी मैन्युफैक्चरिंग में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी को अभी क्यों देखना चाहिए, राइट? एंड देन ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट जो हम थीमेटिक फंड लेके आ रहे हैं उसमें ऐसे क्या डिफरेंट है, क्या स्पेशल है, जो यही थीम में जो कंपटीशन ऑफर कर रही है उससे थोड़ा अलग है, राइट? सो दिस इज द फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन. या तो हम आगे बढ़ते हैं. तो जैसे मैंने पहले बोला कि एक रेट्रोस्पेक्टिव व्यू लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में. अगर आप ये स्लाइड में ये दोनों ग्राफ देख रहे हो तो आपको फर्स्ट ग्राफ में दिखता है कि ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 43 इयर्स, ये पहला जो सर्कल है वो 1980 का है और दूसरा जो है FY23 का, मतलब 43 इयर्स गुजर चुके. लेकिन अगर आप इंडस्ट्री का शेयर देखो जीडीपी का तो 28 का 28% ही है. तो उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, एकदम स्टैग्नेंट जैसा है, राइट? हालांकि जीडीपी बढ़ा है लेकिन इंडस्ट्री का ओवरऑल शेयर नहीं बढ़ा है, राइट? और आप ये दूसरा ग्राफ में अगर देखोगे तो विद इन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो एक सबसेट है वहां पे और भी कम शेयर है, 15 से 17 के बीच में रहा है. लेकिन आप अगर पिछले 10 साल देखो या 15 साल देखो तो एक्चुअली वो
17 से नीचे नीचे 15 की तरफ झुकता गया है, राइट। तो पर्सपेक्टिव ये यहाँ पे लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो डिजर्व करता है जिस तरह की ग्रोथ, वो हुई नहीं है, राइट। और जो नीचे जैसे बताया है कि अगर इंडस्ट्री में आप देखोगे तो वाटर सप्लाई, गैस, माइनिंग, क्वेरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये ज्यादा फ्लरिश हुआ है, लेकिन जो कोर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो इंडिया में स्ट्रगल हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, राइट। इसके जो कारण है वो वैसे तो जाने माने हैं, लेकिन एक बार वापस हम उसको दोहरा देते हैं। अगर आपको याद रहेगा 20-25 साल पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसीजी की बहुत बातें हुआ करती थी इंडिया में, जो चाइना में बहुत अच्छी तरह से हुआ, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड पे उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग बेस खड़ा किया। सब यूटिलिटीज हो वहीं पे अवेलेबल रहती थी, राइट। ऑल काइंड ऑफ स्कीम्स वर गिवन फॉर इट। और वहां पे बहुत अच्छी तरह से पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों, सी पोर्ट और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मिलती थी उनको। तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फ्लरिश हुई। यही स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया ने भी लाने की कोशिश की, लेकिन आज हम जब सोचते हैं कि क्या वो एक सक्सेस था, तो इतना बड़ा सक्सेस नहीं हुआ। देयर आर फ्यू स्मॉल एसीजी, बट जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था उस तरीके से नहीं हुआ। तो यही एक कारण है बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही लैक किया है हमेशा। तो वो पावर रहे या यूटिलिटीज रहे या रोड लॉजिस्टिक्स रहे, हर तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो हमेशा लैकिंग रही है, राइट। और भी कई कारण हैं, जैसे कि लेबर लॉज हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। ईज ऑफ बिजनेस बहुत, मतलब ईज ऑफ बिजनेस बहुत कम था, राइट, ईज नहीं था, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इश्यूज भी काफी आए हैं। और गवर्नमेंट के पॉलिसीज बहुत फर्म नहीं थे। तो बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा करना चाहते हैं तो इनको बहुत स्टेबल पॉलिसीज नहीं थी, एग्जिट नहीं थी, इसके वजह से कम इन्वेस्टमेंट हुई है, राइट। देन देयर वर थिंग्स लाइक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, जहां पे आप जो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हो उसकी ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होता है कि बेहतर है कि आप फाइनल प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करो रादर देन मैन्युफैक्चरिंग द फाइनल प्रोडक्ट हियर, क्योंकि जो कंपोनेंट है जो महंगे हैं इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ज्यादा उस कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। सो ऐसे काफी तरह की मुसीबतें या रीजंस है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में फ्लरिश नहीं हुई है, राइट। अभी जो दूसरा मुद्दा मैं उठा रहा था, बात कर रहे थे हम लोग जिसकी कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है। और कोई भी गवर्नमेंट आए या कोई भी ब्यूरोक्रेसी की चेंजेस हो, फिर भी ये फोकस हटने नहीं वाला है। इनफैक्ट वन और द अदर वे, शायद स्कीम्स का नाम बदल जाए या इम्प्रूवमेंट ही हो, लेकिन स्कीम्स ये चलती रहेगी। तो क्या रीजन है कि ये फोकस अभी यहाँ पे बहुत स्टेबल और इम्प्रूविंग दिखता है मुझे। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट के या अपने कंट्री के ओवर लास्ट सेवरल डिकेड्स अगर चैलेंजेस देखो, तो कौन सी बड़ी चैलेंजेस है। अगर आप मैक्रो लेवल पे देखोगे तो हम हमेशा फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट रन करते हैं, राइट। दूसरी है कि आप देखो सालों से हमारी करेंसी बहुत वीक होती रही है। और थर्ड प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। अभी ये सब इंटरलिंक्ड है। अब हमारा अगर इंपोर्ट्स आप देखो तो देयर इज अ वेरी हाई शेयर ऑफ एनर्जी फॉर क्रूड ऑयल। We are completely dependent on the imports, right? Gold, we are the largest consumer of the gold in the world, right? And gold का import हमारा heavy है। But अगर आप gold और oil भी बाजू में रखते हो and you just look at other merchandise export, right? वहां पे भी हमारे डेफिसिट है, राइट। तो दैट इज वेरी बैड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि
डिफिसिट की वजह से आपकी करेंसी हमेशा वीक रही है, और ये दोनों चीज मिलके क्या होता है, इन्फ्लेशन हाई हो जाती है। कैसे इन्फ्लेशन हाई होती है? बिकॉज आपकी वीक करेंसी will cost you more for oil, right? And which inflates everything, correct? Which is the mother of inflation, which we say. Then अगर आप कैपिटल गुड्स के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, एंड दैट इज अ वेरी बिग पार्ट, तो वीकर करेंसी विल लीड टू हायर कॉस्ट, करेक्ट? तो ये एक एकदम विशियस सर्कल है, जिसको एड्रेस अगर करने का है तो फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ नॉन ऑयल नॉन गोल्ड डेफिसिट, राइट? अगर आप वो एड्रेस करते हो तो दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू करेंसी स्ट्रेंथ, एंड इट विल हेल्प यू टैकल इन्फ्लेशन मच मच बेटर। सेकेंड प्रॉब्लम, कोई भी गवर्नमेंट आए तो उसके लिए क्या है कि we are not only the most populous country in the world, but from education perspective, we are generating highest numbers of graduates and engineers in the world, right? अभी इन लोगों के लिए जॉब्स अगर क्रिएट करनी है तो सर्विसेज और एग्रीकल्चर ये इनफ नहीं है कि इतने सब टैलेंट को एब्जॉर्ब करें। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे कि आईटी वाज वन ऑफ द बेलवेदर सेक्टर जिसने काफी सारे ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स को एब्जॉर्ब किया है, बट एज इंक्रीमेंटली वी आर पिकिंग आउट ऑन दैट एज अ परसेंटेज ऑफ हायरिंग विच हैपेंस ऑन द कैंपसेस, इट इज इंपरेटिव कि बाकी के सेक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग एज अ ओवरऑल पाई has to grow to absorb this kind of engineering and graduate talents, right? Again, इसी का एंगल है दूसरा कि वर्किंग एज जो पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट्स विल स्ट्रगल विद द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट? तो ये सेकंड मुद्दा था मुझे आपको बताने का था कि ये बात आप ध्यान में ले लो कि कोई भी गवर्नमेंट आए, मैन्युफैक्चरिंग पे जो रीफोकस हुआ है वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है इलेक्शन जीतने के लिए या हारने के लिए, और अगर ये आप स्ट्रक्चरली एड्रेस कर सकते हैं तो यू नो आपको पावर काफी समय तक हासिल रहेगी, राइट? ये चार्ट्स आई विल जस्ट रन थ्रू इट, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, बट जो अभी मैंने पॉइंट्स रेस किए थे उसी की बात कर रहे हैं ये। तो अगर आप लेफ्ट साइड के चार्ट में देखो तो 20,000 वाला दिस इज 20 बिलियन डॉलर्स इंपोर्ट्स, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैज ट्रिपल्ड टू 60 बिलियन डॉलर्स, राइट? और करेंसी तो सबको पता ही है, फ्रॉम 2014 it has moved from 60s to now mid or early 80s, right? Similarly, if you look at this right hand chart, जो current account deficit है, आपको दिख रहा है कि continuously we are in current account deficit, and this creates a lot of downward pressure on the currency. ये चार्ट वही पॉइंट स्ट्रेस करते हैं कि जो वर्क फोर्स में इंडिया में लोग आ रहे हैं वो इतनी मात्रा में है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्रो नहीं हुआ तो हम अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ये राइट साइड के ग्राफ में आप देखोगे तो 2020 और 2030 के बीच में इंडिया में सॉरी ग्लोबली 45 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएंगे, लेकिन उसमें से 10 करोड़ तो सिर्फ इंडिया से रहेंगे। Africa as a whole continent will add 24 crores, right? So that's how big the growth of working age population is in India. और मैन्युफैक्चरिंग पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये समझने के बाद कि
30-40 सालों से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जैसे ग्रो होना चाहिए नहीं हुई है। उसकी रीजंस जानने के बाद और ये जानने के बाद कि कोई भी गवर्नमेंट आए, हमें लगता है कि अभी जो रीफोकस या फोकस आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे वो कायम रहेगा, और ये एक बड़ा रनवे है हमारे पास अभी मैन्युफैक्चरिंग थीम खेलने के लिए। Let's move now to what will be the drivers of manufacturing in India. तो यहाँ पे ये चार की पिलर्स हमको लगते हैं which will help thrive manufacturing in India. पहला पॉइंट ये है कि 140 करोड़ की आबादी होने की वजह से एंड इंडिया इज अ वेरी बिग कैप्टिव मार्केट, राइट। अगर आप देखो टू व्हीलर में वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नाउ, चाइना और हमारे बीच में थोड़ी सी ये होती है, बट हम लोग लार्जेस्ट मार्केट है कैप्टिव मार्केट फॉर टू व्हीलर्स, लाइक दैट्स स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, राइट। सिमिलरली अगर आप स्मार्टफोन या फोन्स की बात करेंगे तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट मार्केट, राइट। सो या इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन we have a captive market for every a good, right? And as the per capita income goes up, the consumption will only rise, and it will rise exponentially, right? तो इसकी वजह से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप इंडिया में आ जाती है। अगर हम इनफैक्ट 15-20 साल पीछे भी जाए और हम लोग ऑटो स्पेस में हुंडई की और फोर्ड मोटर कंपनी, फोर्ड हालांकि निकल गई है इंडिया से, बट अगर इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखें तो उन्होंने यहाँ पे जो प्लांट सेटअप किए शुरुआत के, तो शुरुआत में ही उन्होंने 50% कैपेसिटी एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेट कर दी थी और 50% डोमेस्टिक के लिए की थी, राइट। सो बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट दे वांटेड टू कम हियर, बट वो टाइम पे उनको लगा कि मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि जो हमारी प्रोडक्शन पूरी एब्जॉर्ब कर सके, तो उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन हब क्रिएट किया फॉर ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, राइट। और आज तो ये मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, 4 मिलियन कार्स। तो अभी तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी इवन इन ऑटो स्पेस वेयर वी विल बिकम अ ग्लोबल हब। और इन द प्रोसेस ऑटो एंसिलरी और ऑटो कंपोनेंट साइड में तो हम लोग ग्लोबली अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब बन ही गए हैं। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑटो, बट यू टेक एनी commodity or any product, India has a very big captive market. What is the second driver? सेकेंड ड्राइवर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि governments have no choice but to focus on manufacturing, and they will have to address each and every pain point which would be otherwise holding back the manufacturing in the country, right? तो आप देखो, even during the crisis of COVID in 2020, the government announced PLI scheme, which is production linked incentive scheme, right? And over the last almost a decade, we are structurally addressing all other challenges on the software side, whether it's the ease of doing business, whether it's a labor reforms. We have brought down from almost 24 25 labor laws to 4 labor codes, right? And in ease of doing business, we have now in many sectors a single window clearances, right? States are helping offer all the approvals at one place, right? And center is enabling it. So ये जो policy reform जो हुए हैं, that's, I think, in some form it's only the beginning of what we are seeing in terms of pushing the manufacturing in the country. थर्ड फैक्टर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो फैक्टर है, क्योंकि अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो टॉप डाउन या मैक्रो वाली थी। अभी ये थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आज कोविड के बाद देयर हैज बीन ह्यूज डीलेवरेजिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। व्हाट इज डीलेवरेजिंग? कि उनकी जो कर्ज है या लोन है वो बहुत कम हो गए हैं। जो लास्ट मैंने डेटा पॉइंट देखा था उसको अभी 8-9 महीने हो गए,
कि BSE 500 में 200 के ऊपर की कंपनियां ऐसी थी जो नेट डेट फ्री थी, मतलब उनके पास जीरो डेट था, कोई कर्जा नहीं था, उनके बैलेंस शीट पे एक्चुअली कैश थी। लास्ट 20 साल में मैंने ऐसे इतना बड़े तादाद में इतने सब कंपनियों के पास पॉजिटिव कैश है और डेट नहीं है, कभी नहीं देखा है। तो आज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया इज वेरी लो। इसका मतलब क्या है कि आज ये कंपनियां बहुत अच्छी पोजीशन में है कि इनको अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कैपेक्स करना है, तो उनकी बैलेंस शीट अलाउ कर रही है, उनकी फाइनेंशियल मसल पावर बहुत स्ट्रांग है, राइट। देन जो टैक्स रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, राइट, जहां पे 2019 के सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट वर ब्रॉट डाउन टू 25%, और आज की तारीख में काफी जगह पे अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 15% ही टैक्स लगती है, राइट, फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट। तो नाउ वी आर बिकमिंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फ्रॉम द टैक्स perspective for any global company. And if we have to export from here and be competitive in the global markets, the tax structure allows us to price our products very competitively, right? तो ये बहुत important चीजें हैं कि कंपनियां अभी competitive हो गई है because with the help of the tax structure, and companies, because of the strength of the balance sheet, are in a position to uh, take aggressively manufacturing capex, going ahead, right? और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर है मैन्युफैक्चरिंग का, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ड्राइवर है जो मेरे हिसाब से पहले से चल आ रहा था, लेकिन ये बहुत जोर से एक्सेलरेट हुआ ड्यूरिंग द कोविड। वो ये है कि चाइना प्लस वन का जो नॉइस था वो बहुत लाउड हो गया, बिकॉज ग्लोबली सप्लाई चेन कंपनियां डाइवर्सिफाई कर रहे थे, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा था। लेकिन कोविड के टाइम पे कंपनियों ने रियलाइज किया कि पूरा डिपेंडेंस एक ही कंट्री पे चाइना में अगर रहता है, और चाइना जो कि बार बार लॉकडाउन में और बहुत ज्यादा टाइम तक लॉकडाउन में गई, तो बिजनेसेस वर रियली स्ट्रगलिंग विथ अवेलेबिलिटी एंड प्राइस बोथ। माल भी नहीं मिल रहा था और माल बहुत ज्यादा भाव पे मिल रहा था, राइट। तो उसके बाद ये रिस्क चाइना से कंसंट्रेशन रिस्क हटाने के लिए जोर से कंपनियों ने ग्लोबल कंपनियों ने शुरुआत किया डाइवर्सिफाई करना सप्लाई चेन, और इंडिया इज अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रेंड, राइट। और जैसे मैंने कहा, दिस हैड बीन गोइंग फॉर लॉन्ग टाइम, almost a decade before we hit the covid, but this trend has now just accelerated। और अगर आप ऑप्शंस देखो ग्लोबली कंपनियों की डाइवर्सिफाई करने की सप्लाई चेन, मोस्टली देयर आर साउथ ईस्ट एशियन countries like Indonesia, Vietnam, electronics में even Taiwan, right? But and on Latam you have a Mexico and other countries, right? But India in all these names, at least from attractive domestic market, and again what incrementally happening uh, is very very attractive. So yes, it is not easy to compete with Indonesia and other these countries, and it will not that automatically things will happen for us in terms of moving this supply chain, but इंटेंट लोगों को क्लियर दिख रहा है इंडिया में, जो मैन्युफैक्चरिंग पे एम्फेसिस है, राइट, और जेन्यूननेस है उसमें। तो we are getting our share, and I think it's a very big share which is coming our way। और आगे एक दो चार्ट है, उसमें आपको इसका स्केल के बारे में थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। तो ये जो अभी के स्लाइड्स है, इट विल जस्ट हेल्प अस स्ट्रेस द पॉइंट्स वी वर मेकिंग राइट नाउ ऑन द ड्राइवर्स एंड द अपॉर्चुनिटी। तो ये अगर आप चार्ट देखो कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ने वाला है, राइट, सो वी आर एट अराउंड $2,500-3,000 के रेंज में। दिस विल गो अप टू 4,000-5,000 बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, राइट। एंड if this happens, there is clearly going to be inflection in terms of demand for discretionary consumer durable items, right। और इसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में होती रहेगी।
again, if you look at this chart, which shows the consumable class, which is consumable class, तो middle class और affluent, ये लोगों के पास स्पेंड करने की ताकत है और ये लोग मास में है. ये क्लास इंडिया में और नेक्स्ट 10-20 years इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली. तो अगर आप ये 20-21 की ग्राफ देखो, जहां पे द population in middle class is 43 crores, that will rise to 100 plus crores, right? तो 2.5 times growth होगी ये क्लास की, and this is a consuming class. So you can imagine how all the you know uh, all those items of consumer discretionary spends and even staples for that matter will grow dramatically in India, right? और अगर आप रीच क्लास भी देखो तो दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग 8-9 times, राइट? एंड दैट विल लीड टू ह्यूज प्रीमियमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. ये ग्राफ ये जस्ट स्लाइड है विच इज अगेन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग विच वी डिस्कस. तो पीएलआई स्कीम हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल पॉलिसीज हो या लेबर रिफॉर्म्स हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये रिफॉर्म्स सब गवर्नमेंट्स पॉजिटिवली कर रहा है. जितना चाहिए उतना नहीं, लेकिन फिर भी उसमें काफी प्रोग्रेस हो गया है, एंड दैट इज क्लियरली शोइंग इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स विच वी आर अट्रैक्टिंग, राइट? तो आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, सैमसंग एंड एप्पल ऑन द phone side, they are increasing the investments in the country like we never kind of even imagined, right? So almost 1 lakh crore investment has happened on that side, and this is just the start, right? So you can just imagine the scale. Sorry. The PLI scheme, this is really very big, right? So अगर ये स्लाइड पे आप थोड़े नंबर्स पे गौर करोगे तो ओवरऑल आप जो इन्वेस्टमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएलआई में, वो 4 ट्रिलियन रुपीज है. तो 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? और जैसे मैंने कहा कि 1 लाख करोड़ तो स्मार्टफोन्स में ही हो गई थी. So it is a very big number, or this number is expected to produce 40 lakh crore in revenue over next 5 years. ये नंबर इतने बड़े हैं कि it may it's worth to just ponder over this. So 40 lakh crore is half a trillion in US dollars, right? 500 billion dollars. और आज की तारीख में हमारी जीडीपी जो $3 ट्रिलियन की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल 15-17% होती है, राइट? सो इसेंशियली हम लोग बोल रहे हैं कि आज पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो $500 billion है. और पीएलआई अगर सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे कि हम लोग इन्विसाज कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो ओवर नेक्स्ट 5 years इट विल एड अनदर $500 billion. So just think about the scale of the opportunities. Now we all know that the things are not progressing exactly as planned or we expected, but there is a substantial traction which is happening already, right? So if you look at FDI overall, if you look at the exports which are happening of the smartphone from the country, everything is growing at very very high rate. And I believe the manufacturing dominance जो चाइना ने हासिल किया है, वो कुछ 5 साल में 10 साल में नहीं आया, वो पिछले 3 दशकों में से आया है. वैसे ही कोरिया ने भी जो अचीव किया है, इट हैज कम ओवर मोर देन 2 decades. तो मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले 40-45 साल से इंडिया में स्टैग्नेंट था और उसको अच्छी तरह से पुश नहीं दिया था विद फेवरेबल पॉलिसीज, राइट, एंड फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, आज वो इंडिया में जस्ट शुरुआत हुआ है. अब 2020 में पीएलआई स्कीम ये लॉन्च की है. अभी सबको पता है कि मतलब 2-3 साल में पीपल आर स्टिल काइंड ऑफ लर्निंग द रोप्स ऑफ दिस गेम, राइट? पीपल आर स्टिल बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस. दिस इज जस्ट बिगिनिंग, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और एक्चुअल जो इसकी इम्पैक्ट है वो आपको अगले 10-20 साल में दिखेंगे, राइट?
So this is a great sunrise opportunity which is opening up for investors also. So that is why we are so kind of bullish gungo on this manufacturing theme, right? And we believe that the opportunity set is also so large, right? जैसे कि 500 बिलियन डॉलर की मतलब रेवेन्यू बन सकती है, then it can create lot many companies with very large market caps in this space, right? So even after what we have seen, there is a this, the capital goods sector is one of the leaders of this bull rally post covid. This is just the beginning, and we have a long runway ahead of us, right? Again, some of the points to kind of give you confidence that जो मैन्युफैक्चरिंग पे थ्रस्ट है वो होती रहेगी. तो one of the reasons why it is it is possible, or which is a driver on the private side, which is बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, कैश जनरेशन बहुत स्ट्रांग है, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में. वैसे ही अगर गवर्नमेंट की बैलेंस शीट देखो तो जीएसटी कलेक्शन हैज बीन राइजिंग लाइक एनीथिंग, राइट? Initially, it was not even 1 lakh crore, right? And now it is gone to 3 lakh crores. So it is tremendous traction which we are seeing on the not only GST but even in the income tax and other taxes, right? And government is showing that the money which they are collecting from the taxes, their clear focus is capex and the manufacturing push, right? Including infra, because without infrastructure manufacturing will not happen. And if you can see over last 3 years, how sharp there is a jump in the capex push by government, right? This year also, we are going to spend 11.1 crore, and that's on a budgeted numbers, more than 11-12% growth in the budget. And actual terms, if you see, it's a 14-15% jump on the capex side, right? So clearly this is something which is of a high priority to the government. And with this kind of money coming in on the capex side by government, no way this juggernaut will not roll, right? So private you know capital will join the hands. So we already covered this. Again, these are the slides which again I have touched this in some of the other form. You can see on this left hand chart, India is one of the lowest and most competitive now with 15 and 25% tax structure, right? Again, on the right hand side, you can see the corporate deleveraging which has happened in India, and we are at like 25-year low in terms of leverage in corporate India, right? So we're very well placed from multiple angles to see the manufacturing happening in India, right? Again, this is showing how India is rising globally in manufacturing. So this left side graph is India's share in the global exports, and from early 2000 it has risen from less than 1% now to almost closer to 2%, right? But if you see the last decade or decade and a half, so from 2010 onwards, if you see 1.7% से लेके 1.8% तक स्टैग्नेंट था, किधर भी गया नहीं. बट पोस्ट कोविड जो हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, राइट, उसकी वजह से क्लियरली वी कैन सी that there is a upward movement in the our share in the global merchandise, right? वैसे ही आप अगर राइट साइड की ग्राफ देखो, राइट, तो यू कैन क्लियरली सी that in US people are preferring India, right? So US imports from China have come down you know meaningfully since COVID happened, right? And India has picked up, right? So this is something which is not only what we are hypothesizing or we are dreaming, but this is actually happening on the ground. And this is happening across multiple sectors. I talked about mobile phones, right? You can clearly see the way the mobile production in terms of value here on the graph has moved, right? So we are already at
3,50,000 crores, right? So that's a huge number, correct? And if you look at the left hand side, which shows the strength of the Indian economy, तो आप सबको पता रहेगा कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं है स्टील के दुनिया में, लेकिन कैप्टिवली इतना बड़ा मार्केट है कि वी आर 12% or now 14% of the global steel production. So we are becoming very, very big in terms of the capacities of many of these things which are happening here, which means essentially that it's a huge captive market. And be commodities or be brands, the companies will take note of India and they'll come here and set up manufacturing bases here, because if you want to be competitive, right, over a period you need to localize your production. Yeah, again, the point I already made, two wheeler exports may, we are biggest in the world, right? That is possible because we have the largest domestic captive market, right? Um, so I'm again and again showing these examples to drive home the point that it's not that it's only one or two sectors, right? It is across the sectors, right? India has a big opportunity in terms of rising in on the global front, right? So you can again see two more examples here. One is tiles exports, right? So India has steadily gained a market share, whereas China has lost market share, right? So I think what has happened again in chemicals is, I think, for everybody to see in many of the niche segments, Indian players are either top three, or if not the most dominant player globally. And in fact, all of you would be aware that chemical sector in stock market has been one of the strongest in terms of wealth creation over last decade, right? So these are just an opportunities which we are highlighting so that you understand the depth of the manufacturing opportunity, and also understand the scale and the relevance over next decade, right? So again, this graph shows the things which are already spoken, right? So China has been investing for decades, right? And South Korea has also been doing it for decades. And today, Chinese manufacturing is more than 5 trillion, and we are at a 1/10 of them, half a trillion. But PLI itself, if is run well, then it can double the size only from the PLI side. The overall size will double, right? If you look at China, the share of manufacturing in GDP is like 25-26%, right? We are struggling at 15-16%. So there's a huge runway or opportunity for us to improve the manufacturing share in the overall GDP, right? Uh, again, the mobile and electronic exports, I've talked about this now. This graph just show how the acceleration would happen going ahead, right? So if you look at it's a 45% CAGR we are expecting on the electronics exports. And if you are not already aware, the largest attraction in PLI scheme has been in the electronics segment, right? And that is where we have seen 70-80% of overall incentives going, correct? um, I'll skip this the recent trends in Indian manufacturing. I think these are something we all know, very strong, very stable, right? uh, Capacity utilization bodes very well. It's come back to 74-75%. और अभी जो ग्रोथ रेट चालू है 10-15% की, this will open up huge private capex over next within next 2 years, right? क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इट विल बी इन मिड 80s, और वहां से then companies will rush to put up the capacities, because capacities also do not come overnight, and it is not that all plants can be run at 100% capacity, right? So generally plant can run at 85-90% capacity. So अगर 80s में capacity चली जाती है जो 1-2 साल में हो जाएगा, so there will be huge manufacturing capex which will happen in the country, right? Again,
defense is, we know, is a, we are the largest importer of defense in the world, right? लेकिन डिफेंस साइड में हम लोग की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, राइट? एंड every year we spend, few lakh crores, or more than a lakh crore on, defense equipments, right? Most of which used to get imported. The reasons being कि यहाँ पे कोई capable बंदा ही नहीं है जिसके पास you know right weapons है, reliable weapons है, right? एंड ऑफसेट क्लॉज जो 2005-7 में इंट्रोड्यूस की थी, जिसके वजह से अगर हम लोग किसी से भी कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं तो उसको 30% ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंडिया से सोर्स करना पड़ता था इन वन और द अदर फॉर्म। वो नहीं होता था क्योंकि वो ब्लेम करते थे कि यहाँ पे कोई केपेबल ही नहीं है जहां मैं किसी को बिजनेस दूं। मैं तो 30% देने को तैयार हूं लेकिन कोई है ही नहीं केपेबल। आज वो सब प्रॉब्लम्स एड्रेस हो गई है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब इनिशिएटिव अभी पेपर पे नहीं रहे हैं। सो एक्चुअली इट्स हैपनिंग। अगर कोई कंपनी है जिसके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उनके पास अगर एक प्रोडक्ट है जो सब ट्रायल्स टेस्ट प्रूव करता है, पास करता है, तो गवर्नमेंट has given a mandate to, three forces, all three forces, that you have to source locally, right? And these companies in the process are growing, stronger, where they have now ability to form, right technology tie-ups globally, because those companies earlier used to do business on their own with the defense forces. Now they know they have to go through the Indian companies, right? So these companies are, getting, great technology tie-ups, and it is also helping them put domestic capacities for exports. And even the PSUs have been given mandate to improve the exports in their overall, revenue, right? So humongous opportunity which is opened up on the defense side. Again, this is just an example of import duty substitution opportunities. So phenol में mostly India was a import market. 90% was imports of phenol in India. Can you believe that? That was as early as 2017, right? And in FY23 now the import percentage has dropped to 39%. And why is it so? Because one of the companies in the country, they put put at huge capacities after seeing the favorable and stable policies in place, right? So that is how I think uh, all the factors are coming together to improve the manufacturing opportunities in the country, right? अगेन केबल्स एंड वायर्स का ये डेटा है। आप 2019 से जो प्री कोविड डेटा है उससे देखोगे तो 38% CAGR से केबल्स एंड वायर्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं, राइट? सो crazy tremendous opportunity, and in the process these companies have become multi-bagger over last 5 years, right? So far, basically this is the point I wanted to make, that first point, that manufacturing in the country has been stagnant over last 4.5 decades. And what were the reasons for it? Poor infrastructure, poor policies, right? Poor softer issues like poor labor laws. All these things have or getting addressed. It's an ongoing process, right? And we have over last 3 years, particularly post COVID, seen a sharp uptick in manufacturing, a potential and actual work on the ground, right? And we now went through various segments or sectors where it's not just isolated case, but across the sectors we are seeing this opportunity for India to arrive on a global canvas, right? So the point is, India could never achieve, it is achieving today, and the reasons why it is achieving today are stable, and they will only improve here on, right? And it
represents investors a great opportunity because like I said, this is just the beginning of manufacturing, you know, resurgence in the country, right? And I think this will go on for a minimum 2 decades, if not more than that, right? So this is a great opportunity for investment, and that's the reason why we have come up with this focus thematic fund on manufacturing, right? uh, and now, if somebody asks, why but just focus on thematics, right? Challenges hota hai thematics ka कि अगर एंट्री या एग्जिट गलत गया तो हम लोग स्टक हो जाएंगे एक कॉर्नर में, राइट? And it's better to play through flexi cap or multi cap, which is a far better way to generate and create wealth, right? तो यहाँ पे आई थिंक ओनली टू थिंग्स आई विल से. One, uh, which I just mentioned, right? I think it's a beginning of manufacturing journey in the country, and it is not that we are late in allocating to the manufacturing opportunity. Yes, some of the segments within this overall opportunity might be seeing a very high valuation, but there's a reason for it कि ये सनराइज सेक्टर है और इसकी ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल है कि वो वैल्यूएशंस ऑप्टिकली एक्सपेंसिव दिखते हैं. लेकिन इफ वी कैन क्रॉस दैट हम्प and if we have right time horizon, then we will make a very strong return even from this optically higher valuation in some of the sub segments within the manufacturing theme, right? तो ये जो अपॉर्चुनिटी है विच इज आई थिंक इज अ मच स्ट्रॉन्गर कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी, ये डाइल्यूट हो जाती है इफ वी allocate the same capital to, let's say, a flexi or a multi cap, right? Because if you look at the BSE 500 composition, only 50% of that is manufacturing, right? The rest is not manufacturing, and I believe manufacturing will compound at a much faster rate. Then why dilute, right? And even if you don't want to allocate very aggressively, and it is always advisable to have a diversified portfolio for our clients, right? But today I believe it bakes that manufacturing deserves a certain allocation in the portfolio, right? So that is what I will kind of stress and advise each one of you कि कोई देर नहीं हो गई है, और मैन्युफैक्चरिंग की जो लॉन्ग रनवे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो डिजर्व करती है कि देयर हैज टू बी अ सर्टेन allocation to manufacturing theme within the overall basket of our clients, right? Uh, this I'll keep. I think all of you are aware about Canara Robeco Mutual Fund. Our philosophy. We are growth investors at a reasonable price, right? Very strong focus on the quality of management, quality of business, and we don't like to overpay for any kind of growth opportunity. So we do a very thorough work on figuring out that we are not overpaying, though there could be a lot of excitement around it. Yeah, again, very robust process over last 10 years. We have proven it that a very stable consistent fund house in terms of returns, and that below that the backbone has been a strong process and stable leadership and team, right? So I will just quickly move to the very important slide, in terms of what is different in terms of what we are offering within the manufacturing theme, right? So, can somebody just give me heads up on how much time we are running behind or something? Hello. Yes, sir. Almost the time is done. Means if Yeah. we can take the So question. So, quickly, I'll take 2 minutes on the two slides, and then we can open up for Q&A. Is that fine? yeah, yeah, So far, so good, right? yeah. Okay. So, the different approach we are bringing is, there is we the fund strategy here that we have created this 4 buckets, right? Which, I discussed, subtly, earlier also, right? What are the drivers? And we are creating,
transforming those drivers into four buckets of investment in the fund, right? So one which I talked about, which is demographic advantage, or the consumption captive market in India, right? And explosion in terms of the discretionary spend, which happen as the per capita income moves from 2.5 3,000 to 10,000 plus dollar for next decade, right? So that's the first bucket, right? And it's a very steady, stable bucket, right? The second bucket which I have in our fund strategy is a policy reforms, right? Whether from the exports or import substitution perspective, right? Then here, we discuss in depth PLI scheme, touched Make in India, Atmanirbhar Bharat, right? So that creates another set of opportunities to play manufacturing theme, right? And then, what I mentioned was about, China plus one, Europe plus one opening up now. So this is again a structural, theme which was in the play and only accelerate going ahead, right? And the last point, which we talked about was how very well the private capex is set to grow in the country, how government is showing their focus on the capex, right? And how the capacity utilization will lead to huge investment case in country, right? So our fund will diversify investment on these four you know buckets, right? In those four buckets, and to some extent it will de-risk the portfolio, which otherwise could be just aligned to one theme, and if there is some cyclicality which plays through, then overall portfolio will also suffer. But diversifying in these four themes will help a very resilient performance of the fund, right? Second unique thing which we will be doing is that we will try to help investor also benefit from a different life cycle stages of the companies, right? So we all know that when you catch up on a sunrise sectors, the growth potential could be tremendous, right? And the investment can grow exponentially and become multi-baggers, right? But at the same time these are very volatile investments, right? But on the other side, if you have a very stable businesses, maybe a lower growth, but that will help stabilize the portfolio and compound it, right? So what we see, that manufacturing sector which is opening up India is offering us opportunity to play in each of these different categories, right? So if you look at electronic manufacturing services, if you look at electric vehicles, if you look at renewables, these are relatively new markets which are opening up for investors, right? They, for example, the EV penetration is in India is not even single digit, not even 1% on four wheelers, and it's very low in two wheelers, right? Similarly, renewables, if you look at the percentage share which the way it will grow going ahead will be of a complete different magnitude, right? EMS, we've seen already that that's the sector which has received 80% of all PLI incentives, and that is where everybody is going. But then if you look at the size and scale of the companies in that space, it is very very small compared to globally competitive or comparable players, right? So these companies can grow 20-40 times from the current size, right? So that's a very new sunrise sector. At the same time, you know industrials, capital goods are very bellwether sectors, right? As the opportunity opens up on per capita income, I think the autos will turn into really accelerated growth opportunities, right? So there are companies which will be at a different life stage, and it offers a different opportunity for the investor. So in the different perspective I'll share, which will help you even further understand this. If the return on any stock is a function of two things, one is the earnings growth, and another thing is how the valuations move, right? If they move up, then you have a re-rating. So earnings growth plus re-rating, it creates
multi-baggers, right? Now, if you look at each of these segments, right, the new sector, emerging, bellwether, and reviving, you have a different opportunities on both these things. So in new sectors, the earnings growth could be 40, 50, 60%, very fast, right? So compounding can be largely driven by, let's say, earnings, right? But in case of, let's say, turnaround sectors like textiles or, FBI, it could be not only earnings growth, which will get boost from, this, the focus on manufacturing and we winning share globally, but because traditionally these segments have not done very well, they are lowly valued, and you'll have a re-rating also, you know playing out there, right? So on one hand you have high growth, another, the re-rating opportunity. So we will introduce all these, names in the portfolio, which will really, diversify portfolio on a very different dimension, right? And also overall bring down, the valuation of the portfolio, right? So at the portfolio level, I think we will manage the risk reward very, very handsomely in this, fund. Yeah. So I will stop here, uh, you know uh, with this last point, that we have a very differentiated offering, and I hope कि आपको मेरी strategy समझ में आ रही है, 4 buckets, and also, through life cycle, how we will help create alpha using, different segments, but also diversify and overall lower the risk of the portfolio through stability of, some of the bellwether, exposures there. Yeah. So I think we can open the, Yeah, sir. session for So, Q&A. Yeah, yeah, thank you very much for the detailed presentation, sir. my So, pleasure. question has already been from that slide only. Like the question is this the and that is the common question? Is this right time for lump sum or SIP as the markets on Yeah, high side? राइट. तो मेरे हिसाब से मुझसे तो आप लोग ज़्यादा इसमें माहिर है ये सवाल का जवाब देने के लिए, राइट? बट आई विल टेल यू, यू नो व्हाट आई थिंक, राइट? I think it is very important for us to, not try to time the market, right? And however, if you know I always tell people that, there is no single answer to this question. आप आपके क्लाइंट को जानिए. अगर आपको लगता है कि ही इज टू, एंशियस, वो बहुत डर रहा है मार्केट लेवल से, राइट? ऊपर में हो या नीचे में हो, राइट? अगर बहुत डर रहा है वो, तो आप उसको कहिए कि आधा पैसा अभी डालो, आधा बाद में डालो, so that, even if things turn out in different way, तो आप उसको बोल सकते हो कि देखो भाई, आधा तो हम लोगों ने लगा दिया है. तो भाई मतलब कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि 100% इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है, उसको लगता है कि नहीं करना चाहिए, और आपने उसको लगा दिया और मार्केट कल गिर गया, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा बहुत, करेक्ट? एंड यू माइट, हैव अ बैड बिहेवियर. सिमिलरली, अगर आपने उसको बोला नहीं ठीक है मत लगाओ, अभी हम लोग वेट करते हैं वैल्यूएशन, और मार्केट भाग गया, तो भी आपको वो बोलेगा कि कोसेगा एक तरीके से कि आपने गलत एडवाइस दिया करके. तो इसलिए बेटर है आप उसको जज कीजिए. अगर वो बहुत एंशियस है तो आधा तो उसको रखने को, निकालने को बोलिए अगर निकालने का है, या आधा लगाने का, बाकी आधा कमिटेड हमेशा रखिए. अदरवाइज द गुड, I will tell you, right approach is always to be invested. Fine. देखिए मतलब ईयर टू डेट हम लोग इतने डरे हुए थे, और अगर आप स्मॉल मिड कैप का रिटर्न देखेंगे तो इट इज क्रेजी, राइट? 40-50% रिटर्न है, विच इज, यू नो यू वुड हैव लॉस्ट और मिस द बस, राइट? और जैसे कि मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग फंड के लिए भी बोला कि काफी लोग उन्होंने मुझे पुशबैक दिया है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है. तो मेरा यही कहना है कि आप अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, आप एक साइड ऑफ कॉइन देख रहे हो, अगर आप दूसरी साइड ऑफ कॉइन देखो, इवन शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट देखो और स्केलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देखो. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ये एग्जाम्पल सबको आसानी से रिलेट कर सकते हैं. बजाज फाइनेंस अब पिछले 15 साल में 150 गुना हुआ है, और ऐसा कोई पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है किसी ने मुझे बोला कि वो सस्ता था करके. वो हमेशा एक्सपेंसिव था. जिन्होंने नहीं लिया वो, थक गए. अभी हम लोग
को आंसर करना है कि आर वी एट द एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी और द बिगिनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अगर हम शुरुआत में हैं तो आई थिंक वैल्यूएशन से डरना नहीं चाहिए और 100% कमिट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत डरा है तो वी कैन टेल देम टू मे बी इन 3-4 इंस्टॉलमेंट allocate the capital. Fine, fine, fine. And another question is what should be the allocation of portfolio, like 10%, 20%, or 15%? What should be ideal allocation from 100 rupee to this manufacturing theme? See, the way the manufacturing is, अगर आप ओवरऑल भी मार्केट देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये जो बुल मार्केट है उसको लीड कर रहा है, राइट? और हम बॉटम्स अप भी देखेंगे तो क्लियरली ये सेक्टर इज राइप फॉर अ वेरी लॉन्ग रनवे, राइट? एंड इट इज गोइंग टू कंपाउंड एट अ फास्टर क्लिप। तो मुझे लगता है कि मिनिमम 15% तो यहाँ पे कैपिटल एलोकेट करना चाहिए। Fine. And one more question is there is see, since there are very limited options or very limited funds right now, so how are you different from Birla or Axis or Kotak Manufacturing? देखिए अभी आई थिंक फ्रैंकली बोलो तो ऐसा कोई आसान नहीं होता है डिफरेंशिएट करना कोई थीमेटिक में। सो फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का थीमेटिक है, आपको वहां पे डिफरेंशिएट करना है। आप अगर एक्चुअली जाके देखोगे सबके पोर्टफोलियो में आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा, आईसीआईसीआई दिखेगा, एसबीआई दिखेगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रैंकली टू डिफरेंशिएट, राइट? वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब हवे में या पेपर पे नहीं, एक्चुअली हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे और जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आपको समझाया। तो हम लोग की जो 4 बकेट की स्ट्रेटेजी है उसमें कैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, राइट? And we will be able to not only diversify but also represent various opportunities। और कौन से कोई स्केल पे सेक्टर आएगा अपने को पता नहीं है, तो इट विल रियली इंसुलेट पोर्टफोलियो फ्रॉम दैट सिक्लिकलिटी। सेकेंडली जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की मैंने बात की है वो भी मुझे लगता है कि इट्स वेरी differentiated approach which you can judge for yourself looking at other people's approach, right? So that's another approach we are having, right? And I explained you within that life cycle how the re-rating plus earnings growth we will kind of capture to have very strong alpha in the portfolio, right? तो ये चीज है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि थीमेटिक में जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, राइट? तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान देना पड़ेगा जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डिफरेंशिएशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम द हाउस इटसेल्फ, करेक्ट? तो आप सब हमसे जुड़े हैं काफी टाइम से एंड यू नो दैट कैन रोबेको म्यूचुअल फंड इज ए वेरी स्टेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो हमारी फिलोसॉफी से लेके लीडरशिप से लेके जो टीम है दैट इटसेल्फ इज अ बिग डिफरेंशिएटर। तो हम लोग वही थीम को कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोग हाइप और बबल में क्या हम लोग सकिन हो सकते हैं क्या, या हम लोगों ने पास्ट में कैसे बिहेव किया है, that is a very differentiating important factor for you to also consider, right? I hope I Fine. made my point very Yeah, clear. yeah, yeah, yeah. And as you very well clearly mentioned that we already have Can Robeco allocation in our overall investment theme and all. So we will definitely going to support and communicate to our partners. So thank you very much, sir, for today's session. And My pleasure। yeah, there is no more और भी कोई questions. सवाल है तो आई एम here to No, address sir. them। Right now, so there is nothing. But Okay, fine. So we can close the session and great। So thank you yeah, so much for giving the opportunity, right? yeah, I hope everybody found the session helpful and enjoyed also, right? yeah, और कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन बाद में भी अगर आपको आता है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट, राइट? वी विल बी मोर देन हैप्पी टू काइंड ऑफ एड्रेस दोज इश्यूज। yeah, yeah, yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much, huh? Yeah, Bye we and are take care। closing the presentation. Thank Yeah, you. Bye. thank you।